Hello students, welcome to MGM Educations. This is Political Science degree, Political Science Core-1. We are now studying about various approaches such as behavioral approach, empirical approach, legal approach, post-behavioral approach, and institutional approach. Let us focus on some of the short questions relating to this, which is important for your examination. Question number 1. Behavioral approach बोले पिला माने व्यवहारिक पद्धति बोले कहा जाए, right? So this behavioral approach is a very broad approach, like an umbrella. It covers almost all other approaches such as empirical and scientific approach, etc. But it rejects the traditional normative approach. Remember this, okay? And it is more scientific by nature, and it studies the political behavior of human and focuses much on the empirical and scientific method of study, means data based. Okay, then it educates the interdisciplinary focus. Interdisciplinary कहीं कहगला बोले दीटा को से combine करछि, गोटे empirical आ गोटे scientific method को, ठीक अछि. And it stands for the study of politics with the help of knowledge and of other social science. माने पॉलिटिक्स को अदर सोशल साइंस जमती हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी को लिंक करके ये स्टडी करे, राइट? तेणु एटा को बिहेवियरल अप्रोच बोली कहगला. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरल अप्रोच. ये पद्धतिर वैशिष्ट्य बा लक्षण गुड़िक बा कौन गुण. नंबर 1, it studies the political human behavior. Number 2, it is empirical method. Empirical method kimti na in the sense that it doesn't focus on what ought to be. It focus on what is. ଏବେ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କ'ଣ ହେବ କି ନ ହେବ ଏଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି. ଥାର୍ଡ଼ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରଡିସିପ୍ଲିନାରୀ. ଫୋର୍ଥ ହେଉଛି it has a scientific theory method of study of politics. Okay students, next is 3 number. Ankar assumptions. What are the assumptions of behavioral approach? Okay, and you know that the behavioral approach ro gote bada advocate hochi tomar ye David Easton. se koichi जे assumptions गुड़ाक assumptions बेले पिला माने conditions of study, ठीक अच्छे. शर्त इटी स्टडी रे कौन कौन निया जाए. 1, रेगुलर ह्यूमन बिहेवियर. 2, वेरिफिकेशन ऑफ ऑल कनकशंस एंड टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस पिला माने ये तथ्य ऊपर आधारित होता है, राइट? एंड इट मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स को अप्लाई करा जाए. देन यू सी द वैल्यू फ्री ऑफ पॉलिटिक्स बोले मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स. अदर अप्रोच जाक कौन बोले वैल्यू, सोशल वैल्यू को लिंक करके स्टडी करथाउछंती, किंतु आंको माने वैल्यू फ्री. एंड द लास्ट वन इज सिस्टमैटिक और सिस्टमैटाइजेशन ऑफ स्टडीज. ओके स्टूडेंट्स, चाहे 5 लिख देल हो जाए तुम 3 मार्क, राइट? नेक्स्ट बार लिमिटेशंस कौन माने कोट ये पहुँच पारे ना बा विफल अटे, राइट? लिमिटेशंस. सी ह्यूमन बिहेवियर आर as the object of study is always bound to problematic and even fruitless. बिहेवियर को साधारणतः आम कैच कर पारिबानी. तापर सेकेंड, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कैनॉट बी ऑब्जर्व्ड. तापर मनुष्यर सब बिहेवियर को आम एम्पेरिकल स्टडी करि पारिबानी, डाटा मिल पारिबानी, राइट? से गुडा को आम स्टडी करि पारिबानी. बिहेवियरिज्म रो स्टडी रो बाहर लिमिटेशंस पहले, ठीक अच्छे. आ गोटे नंबर 3 मार्क तो आ गोटे नंबर लिखिदबा. बिहेवियरल अप्रोच आर मेक्स पॉलिटिकल साइंस डिपेंड ऑन अदर सोशल साइंस सच एज साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एमानक छाड़ी कि आंकर स्टडी कंप्लीट हो पारिबो नाही, तेणु तांको ऊपर डिपेंडेंट रहइबो. एटा गोटे लिमिटेशन आर. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 5 नंबर. व्हाट इज पोस्ट बिहेवियरलिज्म. एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने.
ए बिहेवियरल अप्रोच ठारू पोस्ट बिहेवियरल अप्रोचटा टिके स्टडी डिफरेन्स रहिबो अवश्य बोथ आर एम्पिरिकल एंड साइंटिफिक बाय नेचर मात्र एमान टिके वैल्यू बेस्ड से माने वैल्यू फ्री मन रखता है जिनटा गोटे हो चलो देखिए आंसर The post-behaviorist accept responsibility of getting involved in the process of social change through social action. एमाने social action माध्यमरे social change को study करंती. आंकर concentration total data based पिलावने. Total based on statistics and techniques that are used as in scientific methods. Okay, but it was to be supplemented by बोले यांकर स्टडी खाली एलोन थिले हबने must be supplemented by the willingness and purposive बोले कोई चलसे willing माने इच्छा purposive माने उद्देश्य थाई करी एमानकर इन्वॉल्वमेंट थिवा दरकार जेतबेले से मान स्टडी करिवे सोशल चेंज इन सोशल एक्शन ओके अच्छा पिलावन नेक्स्ट रिवा 16 नंबर देखो पिला हिस्टोरिकल अप्रोच एटा गोटे ओल्डेस्ट अप्रोच पिला माने आर एडवोकेट प्राय तुमर एरिस्टोटल जेस मिल प्लाटो एमान समस्ते एंड एमाने दिस अप्रोच एडवोकेट्स द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड द हिस्ट्री ऑफ स्टेट देखो इन रिलेशन टू हिस्ट्री ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को एमान एक स्टडी करछंती सेतळ वैल्यू सिस्टम सोशल सिस्टम अलग थिला ओके तेणु यहाँ गोटे ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल अप्रोच बोली कही पारिबा इट जस्टिफाइज द स्टडी ऑफ पास्ट एज ए होल एंड इन फेजेस एज द बेस्ट मीन्स बोथ फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट एंड एनालाइजिंग द फ्यूचर दीटा पाई बोल के एप्रोप्रिएट बोली कही पारिबा नेक्स्ट जीवा 17 नंबर फिलोसॉफिकल अप्रोच इटा टिके इंपोर्टेंट पिला ने इटा भी ओल्डेस्ट इटा गुटे ओल्डेस्ट अप्रोच का स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस बट इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज नॉर्मेटिव एंड एथिकल दीटा कंबाइन करियो एंड इट एडवोकेट्स द स्टडी ऑफ स्टेट एज द फिलोसॉफी ऑफ स्टेट देखो इट स्टेट को एमान स्टडी करिवे सेम टिके हिस्टोरिकल रे काइटा सेम ताको पैटर्न होलिया का and questions like the nature of state, end of the state, ideal relationship of state and individual emanko sabu hochi core matter of studies and it seeks to be theoretically and ethically koila kain pila man bole ye value based discusses and gives answers to the questions okay next jiba eta gote important pila man normative approach normative ta gote behavior gote post behavioral gote e charta important okay देखो normative approach is concerned with what should be or what ought to be not what is बल्ले तार उल्टा empirical रो उल्टा इटा आछे it seeks to prescribe value and value परांक बुट्टस दियंती and standards of conduct which should be there in politics it is concerned with such questions व्हाट शुड बी द स्टेट बोले एटा गोटे प्रकार आइडियल स्टेट उपरे एमान स्टडी करछंती व्हाट शुड द स्टेट डू राष्ट्र कौन हवा कथा किपଳି हवा उचित कौन करवा उचित आ बेस्ट स्टेट कोटा सब आइडियल फॉर्म आ व्हिच पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर बेस्ट बा आइडियल आई ऊपर आंक बेसी गुरुत्व दियंती राइट देखो पिला माने 19 नंबर ता एटा गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का 3 मार्क पाई राइट ब्रुक्स व्यू ऑन लिबरल कंजर्वेटिविज्म ठीक अच्छे मु बाचे सिलेक्ट कर पिला तुम से हिसाब पढ़ दियो ब्रुक वाज ए कंजर्वेटिव बोले पिला माने जो माने पुराना कालिया नीति नियम परंपरा को धरिक बसथिबे से मान को कंजर्वेटिव बोलबे बोले पारंपरिक राइट अच्छा ये कंजर्वेटिविज्म पर बहुत फोकस करची एज डोजेस ऑफ लिबरलिज्म बोलছি लिबरलिज्म बोले उदारवाद he was an enlightened well educated conservative who admitted the value देखो वैल्यू ऊपर बेसी प्राधान्य देछ पिला माने वैल्यू सिस्टम पॉलिटिकल साइंस रे बारंबार आस्तो बोले मूल्यबोध बोले कौन बुझे जानछ ना नहीं
आमर समाज रे गोटे वैल्यू सिस्टम जोटा कि परिवर्तन हो देख 50 वर्ष तले गुरु शिष्य रिलेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी जमती थिला एबे सेमती नाई नाई कि से 50 वर्ष तले नारी मानकर पोजीशन स्टाइल ये से समाज रे तांकर जो प्रकार माने सम्मान थिला एबे से प्रकार नाई बदली जाउची सब सेटा वैल्यू सिस्टम बोलिबे हेले ब्रुक्स कहूची जे admitted value and importance of need for the progress and reform संस्कार आण रिफॉर्म करो मात्र वैल्यू सिस्टम को तुम्हें चेंज कर पारिबनी बोलछे ऊपर दृष्टि दबार छी बोलछे डिस्पाइट हिज कंजर्वेटिविज्म बोले तार कंजर्वेटिव चिंताधारा सत्वे he belongs to British model social political traditions. Okay, he was opposed to revolution and radical बोले उग्र changes and reforms. radical बोले revolutionary change को एमान ये ऑब्जेक्ट करते बोलते evolutionary बोले धारा अनुसार धारावाहिक भाव परिवर्तन लोड़ा किंतु रक्तपात रे परिवर्तन हवा को हवा नहीं was not in support of this type of change. Okay, next बा पिला माने एटा भी important 2 मार्क के 3 मार्क पाई देखो what are the basic components of conservatism दुईटा का अछि पिला माने एक cardinal importance of traditions values and customs of the society 2 full faith in the wisdom of age and historical heritage हाँ आगुटे भी लिख दियो respect for and adherence to traditions customs values ensure peace order stability से एक नंबर पॉइंट एटा मिसे देले हे जिवो पिलावन ओके 3 मार्क पड़े 3टा पॉइंट कर लिख दो एबीसी 20 नंबर ओके ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब if you feel it is useful you can pass me comments and ask me questions I will again load it and I will make a video for you okay students of political science thank you